अभी ना ऑनलाइन डेटिंग चालू हो गया है, डेटिंग एप्स आ गए। सो डू यू गाइस थिंक अभी लव का डेफिनेशन चेंज हो गया है? अब तो मुझे लगता है बच्चे भी बाय पोस्ट आएंगे। तो बच्चे भी चूज कर सकते हो। टक टक ये वाला भेज दो घर पे। होस्टी अर्शद नुपुर मैम, वेलकम टू मिर्ची। कैसे लग रहा है इतने टाइम बाद इंटरव्यूज देके नाइस, बड़ा अच्छा लग रहा है यार। आपको? मुझे अब पता चला कि पर्सनली ह्यूमन बीइंग्स कैसे लगते हैं। जूम कॉल्स पसंद है आपको कि फेस टू नहीं यार, फेस टू फेस? ओके, तो आपके इस कहानी का नाम है कटिंग चाय। तो लास्ट टाइम आपने वो रास्ते वाली और कटिंग चाय कब पी थी? मैं गोवा गया था ड्राइव के लिए, तो मैंने पी थी एंड आई ट्वीटेड अबाउट इट। सो व्हाट हैपेंड वाज, वो कटिंग चाय बेसिकली ना एक ग्लास उसके अंदर आधी आती ना, तो इन लोगों ने कप ही छोटा डाला, इतना इतना सा कप था। तो इतना सा कप था, मैंने बोला ये, मैंने पिया, मैं बोला कि अच्छी है, अभी चाय दे दे। तो उन्होंने दी? तो ऐसे नहीं यार, आई वाज जस्ट किडिंग, आई वाज किडिंग, बट इट वाज रियली दिस मच। दवाई देते ना, ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता फैंस आपको घेर लेंगे मतलब रास्ते पे जाके चाय पीना? मैं बड़ा चिल्लाता हूँ। प्रॉब्लम नहीं, पर ऐसे थोड़ा होता नहीं कि यार अरे तो ज्यादातर लोगों को मुझसे उनको प्रॉब्लम होता है, मुझे नहीं होता। ओके। मेरे फैन मुझे आके प्रॉब्लम होती है, क्यों किया था वो पिक्चर, क्यों किया था। अभी ना लव को कैटेगराइज करा जाता है कि ओल्ड स्कूल लव, मॉडर्न लव। सो डू यू गाइस थिंक कि ये डिफरेंस है अभी? लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मैं ओल्ड स्कूल लवर हूँ, मैं मॉडर्न लव वाला इंसान हूँ। तो आपको लगता है ये चेंज है अभी? Yeah, pretty much. I think it is very different. With age also it changes. And there are some people who like the slowness of the old, and you know, some people are like, "Arey, khatam karo yaar." You know, so it all depends. But there is a difference. So what type of person are we? Old school lover or Old school. Old school. Arshad sir, आप? Huge difference between the time when I fell in love and the time when I speak to my children about love. There is no connection. This is another world altogether. Yeah, so there's a lot of difference. And if you ask me what, I am an old school guy and how. Okay. Big time. अब तो ज़माना है instant coffee, instant noodles, instant love. But yeah, I mean, I'm an old school romance believer. कि we will, you know, like you were saying, love and then face the world. You know, be a unit. There's वो an innocence to मुश्किल है. that. यार एक मजा आता है। अभी ना ऑनलाइन डेटिंग चालू हो गया है, डेटिंग एप्स आ गए। सो डू यू गाइस थिंक अभी लव का डेफिनेशन चेंज हो गया है? अब तो मुझे लगता है बच्चे भी बाय पोस्ट आएंगे। तो बच्चे भी चूज कर सकते हो। टक टक ये वाला भेज दो घर पे। ऑनलाइन डेटिंग इज अ फाइन थिंग है, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? लवली, इट इज वेरी गुड। या The thing is कि सब लोग इतना busy हैं that you don't even, I think, and dating within offices is also not allowed in corporate world. So where do you meet people? Right. आप 12-14 घंटे काम कर रहे हो, तो then you meet people on an app. You Yeah. meet someone on an app. And then you meet and you realize it was a completely different person. राइट। Yeah, exactly. Yeah. मतलब क्योंकि वो फोटोज होते हैं फिल्टर मार के होते हैं, एंड व्हेन दे मीट इन रियल लाइफ। या दिस सीरीज इज कॉल्ड मॉडर्न लव मुंबई। मुंबई के साथ भी क्या लव स्टोरी है? कोई भी ये दोनों तो इंसिडेंट? मुंबईकर्स मतलब born and brought up हैं। लोकल है यार। Yeah. मैं बता रहा हूँ, there is, I've said this many times, there is no city in the world like Mumbai. Nothing, no place comes close. And I have traveled. I have traveled a lot. There is something about this city which is what gets the entire country over here, and people from all over the world want to come here. Right. It is chaotic, it is messed up, everything you can think of, but still the charm and the character that this city has, I don't think any other city in the world has it. राइट। मुंबई सबको अपनी बाहों में भर लेती है। कितना प्यार, कितनी कहानियां बसी हैं शहर में। Like she said, I was born and brought up here, but I actually left the city for a good 10 years. I was living in various other places in the country. But when I came back, it was not like, "Arey, to badal gaya, arey, wo badal gaya." It was just that, okay, the energy is still the same. Manifestations seem to have changed, but the energy is still the same, and it's my place. राइट। So it's just a love story like that, you know. Come, you meet your ex after 15 years, 10 Right. years, you still feel the same. Right. It's just like that. वो ब्रेकअप करना डिफिकल्ट है मुंबई के हाँ, साथ। exactly. या नुपुर मैम, यू? See, I'm a true Indian in a sense. I have lived in Kolkata, Hyderabad, Delhi, and then Bombay and Mumbai. When I came, of course, to the city, it was Bombay. And I think for me, it was like, oh my God, I could finally breathe. This was a city that accepts you the way you are. It just envelops you in its warmth. And for any woman, I think Mumbai is the safest city Yeah, it in is. the country. I mean, एक India और एक Mumbai है. सो अर्शद, आई एम अ बिग फैन, और मैं बोलने के लिए नहीं बोल Thanks, रहा यार। हूँ। तो मुझे ये आपसे जानना है कि तुमको मिला के 4 हो गए। मैं जोक समझा नहीं हूँ, बिहाइंड द कैमरा में पूछूंगा कि क्या जोक था। वैसे ही मस्ती और फैन है मेरे, ऋतु चौथा हो गया। नहीं, ऐसे बहुत गिन रहा हूँ मैं बहुत 5, बहुत 6। फैंस है, बहुत फैंस, ऐसा नहीं है। अर्शद,
He didn't. I'm like, क्यों poor यार? kid, इसके यार. साथ क्यों Poor बैठे हुए kid. एक तो मैं समझ नहीं पा रहा आप बोलता है, सीरियस हो कि sorry, जोक मैं मतलब बहुत That's him only. वो serious था. बोल रहा That भूल सो जा अभी आपकी लास्ट फिल्म थी बच्चन पांडे हाँ। दैट इज अ वेरी डिफरेंट जॉनर या आउट एंड कमर्शियल और अभी ये सीरीज आ रही है तो विच वन डू यू प्रेफर एज इन कि आपको ज्यादा मजा कौन सा करने में आता है मतलब ऑब्वियसली ऑल वर्क इज गुड यार नो आई नो व्हाट यू सेइंग Yeah. सबका अपना अपना स्पेस है ओके फिल्मों में क्या है ना एक फुर्सत से काम होता है कम काम होता है दिन में आराम से काम होता है वो सब बातें इसमें थोड़ा तेज होता है थोड़ा जल्दी होता है विच आई हैव नो प्रॉब्लम बिकॉज आई प्रेफर टू फिनिश फास्ट बट आई थिंक घूम फिर के बात वहाँ पे आती है कि वॉट यू इंजॉय डूइंग आई इंजॉय गुड फिल्म्स आई इंजॉय गुड फिल्म्स आई इंजॉय डूइंग गुड वर्क दैट मेक्स मी हैप्पी दैट मैं कम बैक होम मुझे लगा यार मज़ा आया आज काम करके तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो भले से कहीं पे भी हो इट रियली डजंट मैटर तो वो मी कटिंग चाय गेव मी दैट फीलिंग गेव मी दिस वंडरफुल आई कम बैक होम ऐसे मुझे तो बहुत मज़ा आया जस्ट होपिंग ऐसे यू नो आई होप इज नॉट एन आइसोलेटेड फीलिंग दैट आई लाइक इट यू नो लोगों को पसंद आए नहीं आए and then the trailer came out and I got calls after calls after calls they're like it is beautiful so that is what I like राइट सो द स्क्रिप्ट इज द अरे यार बाकी सब तो ठीक है व्हाट इज दैट वन थिंग अबाउट द स्टोरी यू नो जो आपकी क्लिक की मतलब यू नो ये मुझे करनी है ये सीरीज I actually hadn't heard the entire story when I started. Okay. For me, it was Nupur's confidence in saying you will enjoy it. The end. I was like, okay, I'll do it. there are many things actually and I'll tell you इसकी simplicity है एक इसमें एक honesty है and the reason I mean I'll tell you it's not my story it is Chitranga's story Yeah. I still did it you Yeah. know what I mean Yeah. that's how good this is Yeah. when every actor wants to be the main person you know I'm not it's her story I just found it so beautiful यार टेलिंग नूपुर ऐसे मुझे तुम डाइनिंग टेबल का रोल देते तो ही मैं कर लेता इतनी प्यारी कहानी है इतनी प्यारी फिल्म है so when people see it they'll know what I'm talking about Yeah. but it's real it's about real people it's about real emotions about that feelings that you have in your life you know जो आप जिससे हमेशा जिंदगी पर लड़ते रहते हो कहीं ना कहीं आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा इस Right. छोटी फिल्म में इस सीरीज में मल्टीपल स्टोरीज है मल्टीपल डायरेक्टर्स है तो ऐसा एक प्रेशर आता है कि नहीं यार मुझे स्टोरी अपनी जो फिल्म है सीरीज एपिसोड है वो ना अच्छे से बनाना है एक प्रेशर होता है वो यार वो तो हर काम में होता है Right. मतलब हर प्रोजेक्ट में whether I'm directing a film or a series or a short I always have to bring my A game to the table so कुछ अलग से तो नहीं था but yes of course this is such a wonderful lineup of directors so you know that you better make sure that your work stands its ground but that's always the case with me so I mean yeah did I feel the pressure I don't think I thought about it did you see it on set that any pressure I didn't See, I've been on the set, I've seen it. Okay? Now the point is, मुझे कभी ऐसा एहसास भी नहीं हुआ कि और भी 5 कहानियाँ हैं। मैं अपना काम कर रहा था, you know, हम अपना काम कर रहे थे। She was making the film that she was signed to. Right. We were acting in a film that we were signed to. बाकी लोग अपने कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। And बाकी जितने directors और actors हैं, बहुत talented हैं, बहुत अच्छे अपने काम में। And that's the reason why I'm so confident that each and every story will be absolutely fabulous and pleasure to watch. and very unique like everyone has a unique voice राइट so it'll be lovely to see very different kinds of stories राइट सो आपका एक्सपीरियंस कैसा था वर्किंग विद हर्षद पुष्टि एंड चित्रंगा fantastic yeah I'm like बी ऑनेस्ट oh my God be honest मतलब ऐसे मतलब मैं कुछ और मतलब इतनी देर से क्या झूठ बोल रहे थे? वैसा नहीं है मतलब कुछ ये क्या? सेट्स पे मस्ती ये होती थी क्या वो बात क्या बता होगी? सकते हो हर्षद सर कुछ सेट पे मस्ती करते थे he's always full of jokes Yeah. right he's full of jokes and that's wonderful because it kind of just makes the working environment so happy for me now the process of making filmmaking is as important as the end result and I've seen that I love to surround myself with happy people so my crew is also always happy it's you know it's a very lovely environment that I like on my sets and I think I create it as well and I think Arshad's really helped with that because he comes in with his own energy which is wonderful but the thing is that behind all that laughter and the jokes there is a very sharp actor Right. a very honest actor and then he kind of brings that to the table na to fir matlab
And Chitrangada, such a lovely actress. Pushti, I worked with. I know her in and out. Yeah, you know yeah. what she's capable Yeah. of. So I brought her in for like a very. It's a guest appearance, but I knew that she will bring something to the table. You know. And Chitrangada has a lot of nuance in her acting. Yeah, she's lovely. So it was very easy to work with him because the first thing that he said when he came on set was, "मुझसे कुछ भी करवा लो." अब जब actor surrender करता है, and even Chitrangada just surrendered to being Latika, her character. So I could just mold her the way I saw it, and she was on, you know, she was up for it. So it was just. In my mind, there are things going on. मुझसे कुछ भी करवा लो. अच्छा तुम ये कर सकते हो? नहीं ये नहीं कर सकता. अच्छा वो करो, वो भी नहीं आता मुझे. वो भी नहीं आता. जैसे आपने डाइनिंग टेबल वाला भी एग्जांपल दिया. So I think I had some wonderful actors on set. It makes your job easier, you know. Right. Because then you're fighting time. अरे इस बजे तक location है ये यहाँ से. And I was shooting at a very tough location. We were shooting at CST station for several days. So you know there's a time की train इतने बजे आएगी, इतने बजे निकलेगी, platform यहाँ इतने बजे तक है, and you're not chopping the crowds, right? The trains are coming in every 2 minutes. Right. There's a sea of people comes out, sea of people goes in. So those are logistical things. Right. So if you have to battle logistical things and the rest, then it's difficult. But if you just have to battle logistics, वो तो adventure की तरह होता है. Right. I'm so glad I did this. I really am so glad. Subscribe to Filmy Mirchi for more Bollywood updates.